एजुकेशन लोन अब्रॉड एजुकेशन को अफोर्डेबल तो बना देता है, बट इसको अवेल करना कितना मुश्किल है। रोज रोज सभी बैंक्स की वेबसाइट चेक करते रहो, क्योंकि हर बैंक के एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स अलग होते हैं और कुछ बैंक्स तो आपके प्रेफर्ड कंट्री के लिए लोन भी नहीं प्रोवाइड करते। ये समझना चैलेंजिंग हो सकता है कि इतने सारे बैंक्स में से कौन सा लोन आपके लिए बेस्ट है। कंपेयर करने और सबसे सूटेबल लोन चूज करने के लिए आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए, बस इतनी सी बात के लिए इतनी स्ट्रेस लेने की क्या जरूरत है। Gone are the days when getting a loan approved was a long and exhausting process. Thanks to the new digital portal, you can process your loan, compare details and check all the criteria with just few simple steps. नहीं समझे ना? अरे आई एम टॉकिंग अबाउट द विदय लक्ष्मी पोर्टल. It was launched in 2015 by the Union government to make it easier for the students to get education loan and make education loans more accessible to the masses through the online portal. Hi everybody, I am Simran and welcome to the Student Loan Tips with Epicred. Here we share expert tips and strategies to make your student loan process completely seamless. Our goal here is to ensure that financial constraints don't hold you back from achieving your dreams of studying abroad. आज हम विदय लक्ष्मी पोर्टल के बारे में बात करेंगे, जो एक गवर्नमेंट लॉन्च स्कीम है थॉटफुली डिजाइन टू स्ट्रीमलाइन द एजुकेशन लोन एप्लीकेशन प्रोसेस। पर क्या आपको पता है कि सबसे बड़ी बात क्या है? इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी कम होने की वजह से स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता ही नहीं है, even though the site was launched almost a decade ago. But don't worry guys, Epicred is here to help you. In this video, we'll cover everything you need to know from the basics to mastering the use of this portal for your education loan. So let's get started. So what is Viday Lakshmi portal? तो बात ये है कि स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन लोन्स की इंफॉर्मेशन मिलना और अप्लाई करना आसान बनाने के लिए गवर्नमेंट ने एक एजुकेशन लोन पोर्टल शुरू किया है, जिसका नाम है विदय लक्ष्मी। ये पोर्टल डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के अंडर डेवलप किया गया है और इसे मेंटेन किया जाता है NSDL ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के द्वारा। विदय लक्ष्मी पोर्टल एक तरह से लोन वर्ल्ड का एक मैजिक वैंड है, जहां आप एक फॉर्म से मल्टीपल बैंक्स में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स कैन व्यू, अप्लाई फॉर एंड ट्रैक देयर एजुकेशन लोन एप्लीकेशन एनी टाइम थ्रू द विदय लक्ष्मी पोर्टल. This portal serves as a single window for accessing information and making application for education loans as well as the government scholarships. Now you might be wondering why one should use this portal when you can contact the banks directly. Does it seem like an additional hassle, especially when the education loan process is already so tedious? Now let's explore the benefits of using the Viday Lakshmi portal. First, देखो, इस पोर्टल का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये ऑनलाइन ऑपरेट करता है। पहले आपको लोन लेने के लिए बैंक्स के चक्कर लगाने पड़ते थे, घंटों बैंक्स में बैठना पड़ता था और जब एप्लीकेशन का नंबर आता तब लंच टाइम हो जाता था। लेकिन अब आप घर बैठे सब कुछ आसानी से कर सकते हैं। आप अपनी लोन डिटेल्स और एप्लीकेशन प्रोसेस घर से ही कंप्लीट कर सकते हैं एंड पोर्टल में ऑलमोस्ट हर गवर्नमेंट, नेशनलाइज्ड बैंक और मेजर प्राइवेट बैंक्स इंक्लूडेड हैं। आप घर बैठे सारे बैंक्स के लोन रिक्वायरमेंट्स के बारे में जान सकते हैं और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। कमिंग टू द सेकंड एडवांटेज, विदय लक्ष्मी पोर्टल पर इंटरेस्ट रेट भी NBFCs के कंपैरिजन में काफी कम होते हैं। इन द लास्ट वन इज विदय लक्ष्मी पोर्टल पर प्रोसेस भी काफी सिंपल होता है। यहाँ ज्यादा पेपर वर्क की टेंशन नहीं होती एंड एप्लीकेशन फॉर्म भी इजी है और डॉक्यूमेंट्स भी इतने ज्यादा नहीं चाहिए। और हाँ, आपको गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडीज और स्कॉलरशिप्स भी मिल सकती हैं। इट्स लाइक विनिंग द लॉटरी फॉर योर एजुकेशन। देखो, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स. एट Epicred we prefer to give you a reality check rather than a rosy picture. While Viday Lakshmi is a unique portal, it's not without any flaws. Making informed decisions is crucial, especially with the large sums involved in the education loan. Here the reality is, like many government processes, the Viday Lakshmi portal can be a bit slow. One major issue is that loan approvals can take time if you are planning to start your studies next semester. Apply as soon as possible. Don't wait for the last minute. Since paying your tuition fees before the deadline is mandatory, so act proactively and don't leave any part of the application process until the last moment. दूसरी बात, the loan amount you get from Viday Lakshmi won't cover all your expenses. Now you might be thinking that you are eligible for government subsidized loan schemes, but ऐसा नहीं
नहीं है। प्लस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी थोड़ा स्ट्रिक्ट है। नॉट ऑल द स्टूडेंट क्वालिफाई फॉर विदय लक्ष्मी लोन्स। You'll need good academic marks and a stable financial co-applicant. And if the bank policy requires a collateral, you'll have to provide a collateral as well. So hold your horses and check your eligibility before getting too excited. So we at Epicred can actually help you fast track this process and handle all the eligibility details on your behalf. If you need assistance with navigating the portal and securing your loan approval, reach out to our counselors today. You'll find all the contact information in the description box given below. Now that you are familiar with the portal, let's dive into the loan application process and how to apply. Unlike other banks, the process on this portal is quite straightforward. It's a simple 3-step process. First, register. Start by filling out a single form. Second, apply. Once registered, you can apply for loans across multiple banks. Third, explore your options. The Viday Lakshmi portal provides access to 38 registered banks and over 139 loan schemes, giving you a wide range of options to choose from. Ready to start the application process? Here is a list of all the documents you'll need. First, Aadhaar card or voter ID card or PAN card. Second, a passport size photo. Third, address proof like Aadhaar card, voter ID or the electricity bill. Fourth, parents' income certificate. Fifth, copies of your high school and intermediate mark sheet. Sixth, admission letter from your institute and proof of course duration and details of your expenses. So if you ask us, Viday Lakshmi is definitely a good option for students looking to study abroad. However, it might not be the best fit for everybody. It's essential to thoroughly evaluate all the pros and cons of this portal. Remember, studying abroad is a significant investment, so make an informed decision. So if you are looking for loan options tailored to your specific needs, Epicred can assist you. We recommend you reaching out to us for the personalized advice. That's all for the day, hustlers. If you have any questions about Viday Lakshmi portal or want to share your thoughts on whether this government initiative is beneficial for you or not, leave a comment below. And don't forget to like, share and subscribe to our channel for more education loan tips.